charge to Dr. Girish Ahuja Sir. I request today's faculty, Dr. Girish Ahuja Sir, enlighten us on today's subject. Over to Dr. Girish Ahuja Sir. Sir, please. Good morning to everyone. Good morning, sir. CMA Shripad Badrakar ji, President of the Maharashtra Tax Practitioner Association. I don't know who many are sitting there, but I have some name given by Mr. Sanjay Sharma, Mr. Narendra Sonwala ji, Chairman of the Organizing Committee, Mr. Prashad Deshpande, Chief Coordinator, Mr. Advocate Anurudra Chauhan ji, and Kamlesh Sabhu ji, Coordinator. We have the other name also, but I don't think they are sitting here. I have just copied their name. Advocate Shashank Bithaiwala ji, Anil Chauhan ji, Narendra Sonawala, I have already said, CA Girish Rathi ji, CA Khyati Vasani ji, Advocate Vayan Gupta ji, and of course, above all, I have a very close and very dear friend sitting in front of him from Delhi, Advocate Sanjay Sharma ji, who told me that you have to go to give this lecture. Said I can't say no to him. So thank you very much, Sanjay ji, ladies and gentlemen. Well, friend, I just want you to check out one thing. Would you like to ask questions there and then, or you all ask questions later on? I can answer the question there and then if you want. Because if I complete a particular topic, a particular issue, if you have any question, you can ask there and then. Otherwise, let me choose everything, because by the time the lecture is over, people will forget everything. So if you want, per issue, we can discuss. It is up to you, sir. I'm starting with an issue relating to section 45(2) and section 28(6)(a). You know, earlier, conversion of capital asset into stock in trade, as per section 45(2), is a transfer. But the capital gain does not arise in the year of transfer. Although as per section 45(1), capital gain arises in the year of transfer. But as per section 45(2), this is an exception to 45(1). The capital gain does not arise in the year of transfer. It arises in the previous year in which the converted asset is sold or otherwise transferred. So there is a postponement of that thing. There is a postponement of liability of paying the tax at a later date, although transfer takes place in the year of conversion or in the year of treatment as stock in trade. Normally people ask me, what do you mean by conversion into stock in trade or treatment as stock in trade? Because the language used in 45(2), converted into stock in trade, treated as stock in trade. Converted into stock in trade normally happens in the case of individual or HUF. Suppose there is a personal asset of an individual, which is not a business asset. There is a personal asset. He is not started of the business. He is not showing any balance sheet. Now what he does is, he brings the title into the business of partnership, into the business. And what is done is conversion of capital asset into stock in trade. He had an asset, he had land, he had shares, he may be having any asset. Now he wants to start business of selling those shares, business of trading in shares, business of selling of the land and all that. So what he has done, his personal asset converted into stock in trade and brought to the business. This is called conversion. Similar can happen in the case of Hindu undivided family. They are personal assets. But in the case of partnership firm, in the case of company or others, they already have that asset in the balance sheet, maybe as capital asset, maybe as capital asset. It is shown as a capital asset and it is shown as an investment. Now you want to start the business of selling that land, selling the jewelry or trading in jewelry and all that. What have you done? Treated that capital asset into stock in trade. This is treatment. Earlier treatment was capital asset. Now treatment is stock in trade. It is already in the balance sheet. In the case of individual, it may not be in the balance sheet. In the case of HUF, it may not be in his balance sheet because he doesn't prepare balance sheet. That means you are converting personal asset into stock in trade, personal capital asset. That was in the case of individual HUF. But in the case of a firm, everything will be in the business. Everything will be in the case of a company. Everything will be in the balance sheet.
And earlier they are showing as investment, now they are showing an investment. I normally ask, what entry do you pass? For treatment as stock in trade. For conversion, though, you can say asset account debit to capital account. But what you do, it is already there in the balance sheet. You don't do anything earlier. Online. Prior to that, when we are having physical books of account, there was nothing from asset, it was brought down to stock in trade. That's why you said as treated as stock in trade. There was no entry passed. There was no entry passed in the books of account, or if it is a physical books of account, it is from asset, it was brought down to stock in trade. But now, because of tally, you have to pass an entry to bring it as a stock entry. Earlier कभी नहीं होता था, क्योंकि वहां फिजिकल बुक्स से, फिजिकल बुक्स में तो लैंड में ही है, शेयर ही है, बाद में आपने स्टॉक इन ट्रेड में डाल दिया तो उसको सिर्फ बैलेंस शीट में डिपिक्ट करते थे, स्टॉक इन ट्रेड में ले आते. बट now because of tally system, you have to pass every entry, and then you will pass that entry and bring it as a stock entry. But capital gain will arise when that stock is otherwise sold or otherwise transferred. Meaning thereby, at that time, there will be two gain. One is business gain or business loss. What will be that? Fair consideration price minus fair market value on the date of conversion or treatment. Consideration price means sale price minus fair rental value on the date of treatment. This is either business income or business loss. And then there is a capital gain also. How do you calculate capital gain? Fair market value of the asset on the date of conversion or the treatment minus cost or index cost. Minus cost if it is short term, index cost if it is long term. And we use to calculate capital gain. One more thing. In this case, capital gain is not calculated if the part is sold. This way, no, it is not done. It is depending upon proportionate amount. Suppose I have share of 2,000, what you call Reliance share. I have started into a stock in trade. I am now trading in share. I have sold only 200 share. If I have sold 200 share, the capital gain will only be calculated for 200 share. Balance 800, 1800, it will not be calculated. That will be calculated when it is sold or otherwise transferred. So proportionate amount, 200 share, consideration price minus fair market value of 200 share on the date of conversion, business income, fair market value of 200 share on the date of conversion minus index cost or cost of those 200 share, and you calculate capital gain. So capital gain is being postponed till that asset is sold. If the entire asset is not sold, we are going to calculate the capital gain only to the extent that the asset is sold. Only that part where the asset is sold. This is one thing. Very simple it ought to be. It is already there for ages. The new thing which has come, conversion of stock in trade into a capital asset. This is a new thing. Conversion of stock in trade into a capital asset. Earlier was capital asset converted into stock in trade. This is conversion of stock in trade into capital asset. Section 28, 6A, which was inserted about 3 years back, says there will be a business income in the year of conversion or treatment as capital asset. Business income, although you have not sold, what have you done? Stock in trade has been brought up to the capital asset, but still you will be liable to a tax under the head business. How much? How do you calculate? Fair market value of that asset on the date minus the cost will be treated as business income. This is section 28, 6A. Sounds very simple, but wait a minute. There is a builder who has constructed 20-story building. He's a developer, 20-story building. He's trying to sell. This is his stock in trade. Building is a stock in trade. He's selling the flats there. Later on, what he decided is, let me have 2 floors for my office. 18th floor I'm selling. Let me have 2 floors for my office. Kindly note, this 2 floor is now conversion of stock in trade into capital asset. Usi din tax lag jayega and will be business income. How would you calculate? If it is flat, stamp duty value of the flat minus the cost will be treated as business income liable to be taxed
in the year in which the conversion has taken place or it has been treated as capital asset. वो बन जाएगा. हाँ, उसके बाद आपको depreciation मिलेगी. जब आपने capital asset अपने काम के लिए use किया, you may charge depreciation, but you have to first pay capital, what you call business income, because of conversion of stock in trade into capital asset. This is section 28(6)(a) vis-a-vis section 45(2). Any issue, any question you want to ask of this, you are most welcome to ask. Then otherwise, I will proceed further. Any question at this stage. I want to take topic, then question, then topic, then question would be better. If you have any question. And if you don't have, please let me know. I will proceed further. Any question, sir? Any question from any side? If they can raise their hand or No question till now. Pardon me? No question till now. No question. Now I take the second part. Since I'm talking about a little bit of capital asset, I'm talking about a very important issue which normally people have forgotten. Section 45(3). As per section 45(3), it says where any capital asset is brought by a partner into a partnership firm or by a member into the AOP, it is treated as transfer. This is what is 45(3). That partner has brought any capital asset into the business of partnership firm, or a member has brought any capital asset as capital into the business of AOP. They have brought as capital contribution an asset. Law says it is a transfer. And there will be a capital gain in the hands of the partner or the AOP, as the case may be. There is going to be a capital gain in the hands of the partner. But 45(3) says, for the purpose of computing capital gain, the consideration price shall be the value recorded in the books of account. Consideration price shall be value recorded in the books of account. Let me take an example first, and then I will take you to something which is very important. Suppose I have a land which I bought for 2 crore, and I am bringing this land into the business of partnership firm. I can bring it. Land account debit to partner's capital account. But my point is, there is a transfer. There is a capital gain. The question will arise, how would you calculate the capital gain? I am saying we will take the consideration price as the value recorded in the books of account. My cost was 2 lakh. I may record the value only at 2 lakh. Or if I record the value at 2 lakh, and there may be an index cost, which may be 2 crore, let's say, value recorded 2 crore, index cost 2.5 crore, there will be a capital loss to the partner. Capital loss. I bring this asset of 2 crore into the business of the partnership firm at 3 crore. Value recorded makes up. And my index cost is, let's say, 2.5 crore. I will have to pay capital gain. Partner will have to pay capital gain of 50 lakh. Partner will have to pay capital gain of 50 lakh. If I recorded at 4 crore minus 2.4 by 1.5. And if the 5 crore, even stamp duty value is 5 crore. I don't bother about stamp duty value because value recorded in the books of account. But now wait. There is a section 56, subsection 2, clause 10, which was introduced from 1st of April 2017, previous year 17-18, which says, section, where any person, please note the word person. Earlier section 56(2)(7) was where an individual ratio. Now section 56(2)(10) has replaced section 56(2)(7). And section 52(10) says where a person receives, person can be individual, HUA, firm, company, AOP, BOI, any person receive from any other person or persons sum of money aggregating more than 50,000. I'm not concerned. Any immovable property whose stamp duty value is more than
the value recorded in the books. Stamp duty value is more than the value at which it is transferred. Or there is an inadequate consideration. There is an inadequate consideration. It's not a gift. There is an inadequate consideration. The difference between the stamp duty value and the value that will be treated as income under the other sources. Now try to understand. This was not there prior to 1/4/2017. So 45(3) could be taken as recorded at the book value. But now if I 45(3), I go for 45(3), I recorded at 2.5 crore. Stamp duty value is 5 crore. No doubt, partner will have to pay tax 2.5 crore or minus index cost 2.5 crore nil. But the firm will have to calculate the value as stamp duty value 5 crore minus the consideration price recorded in the books of account 2.5 crore. 2.5 crore will be the income under the other sources in the hands of the firm. If the firm has recorded the value at 4 crore, partner will calculate the capital gain 4 crore minus 2.5 crore index cost 1.5 crore. But no, firm will have to pay tax under their income from other sources 5 crore stamp duty value minus 4 crore at which it is recorded 1 crore. So my point is the purpose of 45(3) is defeated. The purpose of 45(3) is defeated because if I bring it at a value less than the stamp duty value, automatically the firm will have to pay tax on the inadequate consideration. The partner may save the money, but the firm will have to pay tax. So now if the partner brings it at 5 crore, recorded the 5 crore, partner will have to pay capital gain tax on the 5 crore minus 2.5 crore. Point is 2.5 crore and he can take the benefit if he want 54 or 54F or whatever is applicable to him. But in that case, the firm will not have to pay tax because it has acquired at stamp duty value and it is not an adequate consideration. So my point is everyone, because this is not live, otherwise I would have asked the question there and then. What is the value? I have not asked. But my point is, please note with effect from 1st April 2017, if you bring any capital asset into the business of partnership firm or in the business of AOP, if you bring it at less than the stamp duty value and if the shares are there at less than the fair market value, you know that 56(2)(10) will be immediately applicable and you will have to pay tax in the hands of the firm. Firm will have to pay tax on the fair market value or stamp duty value minus the value recorded in the books of account. Clear? Is it clear? And if it is clear, then I will proceed further. Now and I request you, at least 2-3 persons should be in front of me. I don't know what is happening. I'm talking to the walls. I'm talking to the walls, sir. Sanjay ji, very good. Thank you very much. Because I know somebody sitting in front of me. What I'm talking about, I don't know. They're all black in front of me. So I can't say, now thank you very much, Sripad ji also. You are there also now on the line. So I can see the faces and understand whether they are following or not following. If it is on the wall, if it is black screen in front of me, I don't know whether they have been able to hear or they have been following or not. Or I may ask question also to them, sir, is it clear? Then, so is it clear, sir, Sripad ji? Or any query in this regard? Only 2 persons are in front of me. One is Mr. Sanjay Sharma from Delhi. Another is Mr. Shripad. Along with Mr. Shripad, there is some gentleman. I don't know the name. So sorry, sir. But there is. Sir, my point is this, but point clear or any issue in this point. This is a very important point. Normally, people are committing a mistake. They are reading 45(3) and they are not reading 56(2). Sir, whatever you have told till this moment, we have got it, and you can proceed further, sir. Okay, no query. Thank you, sir. Thank you. Very good. Very good. If there is no query, very good. Now, I take a case different. There is a case of transfer of shares of unlisted company or unquoted share, or there is a case of issue of share by a company. First, I'm taking transfer of share. Here, Section 50CA has come. And according to Section 50CA, if there is a transfer of unquoted share,
transfer of unquoted share by a person to another person, there will be a capital gain. But capital gain will arise. For the purpose of computing capital gain, you will have to take the fair market value of unquoted share. Fair market value. Earlier in the company, whenever you wanted, you could transfer the share to anyone at the face value. Or maybe you give it to your brother, maybe you just change the name and transfer at 10 rupees. Wait here. 50 CA has come. And 50 CA says, if there is an unquoted share, quoted share is a different thing. Unquoted share, which includes also unlisted share. If there is an unlisted share of a company or a private limited company or a public limited company, and A transfer that share to B, A will have to transfer that share to B at fair market value. And if he does not transfer at the fair market value, A will have to pay tax. And simultaneously, 56.210 says the difference between the fair market value and minus the cost, minus the value at which it is transferred, will be taxable under the income from other sources. Is this clear, sir? Is this clear? I'm saying that you are transferring the share of an unlisted company or unquoted share or a private limited company, A transfer to B. It has to be transferred at fair market value. Please note at fair market value. Otherwise, difference between the fair market value and the value at which is transferred shall be taxable in the hands of the transferor as capital gain. And in addition to that, in the hands of the recipient of that share, transferring difference between the fair market value and the price at which it transferred will be taxable under the head income from other sources. Suppose I have transferred share of a private limited company to X or to my brother also. I'm not saying you are, if you make a gift to your brother, it is a different thing. If I'm transferring as a way of gift, it is not a problem. But if I have share whose fair market value is 200 rupees, I have transferred to Sanjay ji at 120 rupees. Fair market value is 200, transferred at 120. First, I will have to pay tax on the difference between 200 and 120, 80 rupees. I have to pay tax also because my transfer price will be 200 rupees. Capital gain will be calculated on 200 and not on 120 rupees. And Sanjay ji will also have to pay tax under 56 subsection 2 clause 10 because he has received a share at the rate of 120, whereas the fair market value of that share is 200. So difference between the fair market value and 120, 80 rupees, the Sanjay ji will also have to pay tax on that. So therefore, when you transfer any unquoted share, please transfer at fair market value. Otherwise, seller as well as the buyer will both be liable to pay tax. Seller as well as buyer will both be liable to pay tax. It is just exactly like 50C, stamp duty value. If you transfer below the stamp duty value, both the seller and the buyer has to pay tax on that. Buyer has to pay tax on income under the other sources and seller has to pay tax as capital gain. Similarly, exactly 50C, it is 50CA because 56.210 also includes shares and securities. And I am also taking, so I'm transferring the share to you. If I make a gift of share, and if then it is, I'm not liable. But the person who receives the gift, if he is a person other than the relative, will have to pay tax on the fair market value. Everybody knows. But I can't say, I can say all the shares sold to my brother, by fair market value 200, given for 120. Absolutely nothing. Even if he's your brother, he even is your relative, you have to pay tax on 200. And he has to pay tax on 800. I could have done some shares sold at 200, some share gifted to my brother so that there is no liability. Some share sold at 200 to my brother. So there is no question of any tax. Whatever capital gain will have to be paid by the person who is making a gift and selling the share, and the recipient will not have to pay tax. He is my brother. But rest share I may gift him. So I am not covered under 56.210. Neither I will have to pay tax, nor my brother will have to pay tax.
But I can't say I've sold my share of 200 to my brother for 180. So 80 is a gift. No question, 80 is a gift. You could give out of 1,000 share. If you want to give 500 share, you may sell at 200 and you may give the balance 500 as a gift. There is not a problem. But you can't give 1,000 share at 120. If you give that, he will have to pay tax on 200 rupees as capital gain, and the recipient, the donee, will have to pay tax on the difference between 200 and 120, 80 rupees as income under the other sources. Is this clear, sir? Is this clear? And you have to calculate fair market value as per rule 11UA1. You have to calculate fair market value as per rule 11UA1 of income tax rules. 11UA1, which says that you will have to take for jewelry the market value, for archaeological collection market value, for property stamp duty value, for all other asset book value, and calculate the asset minus liability and calculate the value of the share. You will have to calculate as per 11UA1. 11UA1 has very clearly said that what will be the value of jewelry, what value it will fetch if sold in the open market, that is fair market. 2, what will be the market value of archaeological collection, the drawings, paintings, sculpture, work of art, fair market. What will be the market value of immovable property, stamp duty, and all other assets, book value. Add up number of share, you can calculate the value of market value of the share. There is no need to go to any chartered accountant to calculate that share, but these have to be valued on the date of valuation. On the valuation date means the date of transfer. You will have to calculate the value of the asset on the date of transfer, not on 31st March. You have transferred on 1st of October. So value of all the asset on 1st of October. And then you divide by number of shares, you will be able to get the market value of the fair market value of the share. You have to transfer at that price. Otherwise, seller as well as buyer will have to pay tax on the difference. Is this clear? This is transfer of unquoted share, which has to be done similarly like 50C at fair market value. Clear, sir? Any question so far? Clear, sir? Because we had been doing in the past, all shares, where is a private limited company, transfer anytime to anybody. You can transfer at any price. No question now. You have to transfer at the fair market value. Clear? Sir, there are many in front of me. Just say yes. Otherwise, say no. Sir, some questions are coming in the chat box. The organizers Chat will box take it to the end. मेरे को बता दे, somebody may take the lead and ask me the question Either from they chat can box. sort them out. Please, you keep The chat asking box from में the बहुत chat सारे box. questions हैं. You want me to read from chat box? I can do it, but some coordinator should be there who say these questions are there and they will ask me the question. They will ask me the question. Sir, any question no far? For Yes, me, sir. it is very difficult to read because I Yes, don't sir. read anything. I don't keep any paper with you. So you have Yes, to sir, we ask. have- Should I read those questions, sir? Some moderate, you may read out and I'll give the answer. Whosoever may take the lead and do it. Shripat ji, Yes, sir. you can read from the question answer that the question Sir, मुझे पढ़ना ही नहीं icon आता, is there. मैं बड़ा आदमी हूँ. No, sir. Sir, I'm reading the question for you. Please. If a person sold 2 houses and invested in a residential house, can he claim deduction under section 54? Kindly guide. ये जो इशू आ रहे हैं ना, ये उस इशू का नहीं है. मैं बता देता हूँ, ये इशू उससे नहीं है जो मैंने 2 बातें करी. These are your general issue I would have taken, but let me tell you. Now, what is the law? Sell 1 residential unit, residential house, buy 1. Sell 1, you can't buy 2. You can't buy 2. Yes, there is one case where you can buy 2, otherwise not good. But another point, sell 2, buy 1, allowed. Sell 2, buy 1, allowed. So when you are selling 2 houses, 2 residential, please note the word residential, and you buy 1, you will get the benefit of section 54 to the extent of the capital gain invested. Sell 2, sell 3, buy 1, allowed. Sell 1, buy 2, not allowed. Only in one case where the capital gain does not exceed 4 crore. Otherwise, 2 crore. Otherwise, sell 1, buy 2, not allowed.
Sell 1, buy 2 has been allowed only for one case where the capital gain does not exceed 2 crore. You can buy 2 flats. Otherwise, sell 1, buy 1, sell 2, buy 1 allowed, sell 3, buy 1 allowed, sell 1, buy 2 not allowed. This is the 54. But the wide is, issue was 45.3 or issue was, which I was talking about, transfer of share under 50 CA. If that is not there, then you can keep on asking any question. I have no problem. I have no problem. Ask anything from income tax. I have no problem. Sir, these were the some other on the other issues, not on the topic which. That's what I'm saying. If it is on the other issue, then we can take it at the end of the vote. We can take these questions later on. At the end of the vote. And it will be an open house. Yes, Ask yes. anything on income tax, I will answer. But Yes, now I'm taking issue-wise issue. So you may please First, let us continue with your complete the issue. deliberations. If Yes, you sir. have a question on this issue which we have done, we ask it, otherwise not. Okay. Now I'm taking to So section you 56 continue with your subsection. deliberations. Acha. You continue with the I'm not deliberations taking at the end of subsection the vote. 50, We will take subsection up the 2 questions. cross 7. Section 56, subsection 2 cross 7. If there are a company in which public are not substantially interested, a company in which public are not substantially interested means closely held company. This closely held company can be a private limited company or even public limited company. There is a closely held company. They want to issue share. हमारे जमाने में तो कलकत्ता में क्या होता था, 10 रुपए का शेयर 1000 में बेच देते थे नई कंपनी, 990 रुपए प्रीमियम. 10 रुपए का शेयर 2000 में भी बिका है एट वन टाइम. याद है संजय जी, आपको तो पता होगा क्या क्या होता था. 10 का शेयर 2 नई कंपनी है, अबे 10 का शेयर 2000 का कैसे बिक गया? ऐसी कौन सी कंपनी ने जादू कर दिया? आपको पता है क्या हुआ करता. अब वो जादू बंद हो गया. Now you, if you want to issue share, you can share issue more than the face value. If you want to issue more than the face value, then it cannot be more than the fair market value of that share. The premium can be difference between the fair market value and the face value. उससे ज्यादा प्रीमियम हो ही नहीं सकता. आपको उस कंपनी की फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू, और फेयर मार्केट वैल्यू से नंबर ऑफ शेयर करके आप उस प्रीमियम पे उतना प्रीमियम ले सकते हैं. द प्रीमियम कैन नॉट बी मोर देन दैट, एंड द प्रीमियम इज मोर देन द फेयर मार्केट वैल्यू. अगर लिया है तो बैलेंस विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी. अब आपका फेयर मार्केट वैल्यू 70 रुपए आ रही है और फेस वैल्यू 10 रुपए, ये 60 रुपए प्रीमियम दे रहे हैं. ये 60 रुपए प्रीमियम कैसे निकाला? फेयर मार्केट वैल्यू 70 रुपए होनी चाहिए. अगर आपने 70 रुपए फेयर मार्केट वैल्यू 90 में बेचा है तो फिर आपको 20 रुपए पे टैक्स कंपनी को देना पड़ेगा. 70 रुपए तक आप कमा सकते हैं. यही 100 रुपए है तो 100 रुपया. अगर फेयर मार्केट वैल्यू 10 से कम है तो मैक्सिमम फेयर मार्केट वैल्यू पे कर सकते हैं, फेस वैल्यू. लेकिन फेस वैल्यू से ज्यादा बेचना है तो वो फेयर मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू, उससे ज्यादा प्रीमियम हो ही नहीं सकता है. ये 56(2) वो स्टार्टअप के केस में अलग है, कुछ एक्सेप्शंस हैं. दोज आर डिफरेंट थिंग. नॉर्मल केस में आप प्रीमियम जो ले सकते हैं मैक्सिमम इज फेयर मार्केट वैल्यू माइनस द फेस वैल्यू. इससे ऊपर प्रीमियम हो ही नहीं सकता. ये बता. अब आपको ध्यान सुनिए जरा, मैं इंपॉर्टेंट जो बताने जा रहा हूं. फेयर मार्केट वैल्यू शेयर की कैसे निकालनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लोगों की गलत फहमी है कि सिर्फ सेक्शन 11 UA सब रूल 2 लगता है. सर 11 UA सब रूल 2 सिर्फ वैल्यू ऑफ द शेयर जो कंपनी में, अगर उस कंपनी जो शेयर इशू कर रही है उसने कहीं इन्वेस्टमेंट की है, उस शेयर की वैल्यू निकालने की. अदरवाइज दोनों सेक्शन लगते हैं, रूल 11 UA 1 एंड 11 UA 2. अब जरा ध्यान से सुनिए. मैं एक कंपनी हूं, मैं शेयर इशू करना चाहता हूं संजय जी. मुझे अपने शेयर की जो इशू करूंगा उसकी फेस वैल्यू निकालनी, फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ेगी. कितने में मैक्सिमम कर सकता हूं, उससे ऊपर करूंगा तो मुझे टैक्स लगेगा. सब मैंने ये कैसे निकालनी है, उसमें एसेट्स है. तो संजय जी मैं पहले एसेट्स में जाऊंगा. उसमें अगर लैंड बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो 56(2) कहता है उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लीजिए, उस एसेट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू. उसमें कोई ज्वेलरी है तो उसकी मार्केट वैल्यू लीजिए. उसमें कोई आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग है तो उसकी भी मार्केट वैल्यू लीजिए. उसके ऊपर बाकी एसेट्स हैं उसकी बुक वैल्यू ले लीजिए.
यहां तक तो हो गया, लेकिन अब तीसरी चीज है, उसमें शेयर्स भी हैं, इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनीज। जब आप ट्रांसफर करते हैं, मैं आपको ट्रांसफर करता हूं, उस केस में रूल 11UA1 में क्लॉज सी का बी क्लॉज लगता है कि कैसे शेयर की वैल्यू निकालनी है। लेकिन अगर आप मैं इशू कर रहा हूं तो उसमें रूल 11UA सब रूल 2 लगता है। सब रूल 2 कहता है A-L डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर नॉट मल्टीप्लाइड बाय पेड अप वैल्यू ऑफ दैट शेयर। मतलब उसमें मैंने क्या करना है, सिर्फ शेयर की वैल्यू के लिए, शेयर किसकी शेयर की वैल्यू, जिस कंपनी के शेयर मेरे पास है उसकी वैल्यू निकलवानी है मैंने। कि वो वैल्यू कैसे निकालें, उसकी वैल्यू निकालते हैं, उस कंपनी के ऊपर शेयर है, उसके पास लैंड है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेगा, उसमें ज्वेलरी है तो मार्केट वैल्यू लेगा, बाकी की बुक वैल्यू लेगा, वो एसेट्स लेनी है और उसके बाद माइनस लायबिलिटी करके उस शेयर की वैल्यू निकाल, हमें उस शेयर की वैल्यू अलग निकालनी है। वो 5627B में निकलते हैं, सॉरी 5627B के लिए 11UA2 ओनली फॉर द पर्पस ऑफ शेयर्स इन अदर कंपनी। बाकी में तो 11UA1 लगता है। लोग सारे यही बोलते हैं 11UA2 11UA2 तो मतलब उस शेयर का है जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, आपके अपने शेयर की नहीं है। अपने शेयर की वैल्यू करते हुए आपने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की, आपने ज्वेलरी की वैल्यू मार्केट वैल्यू लेनी है, आर्कियोलॉजिकल ड्राइंग पेंटिंग की मार्केट वैल्यू लेनी है, बाकी की बुक वैल्यू लेनी है। लेकिन शेयर की क्या वैल्यू लेनी है, शेयर भी तो है उसमें, तो शेयर की वैल्यू अलग निकाली जाएगी। 11UA सब रूल 2 के हिसाब से शेयर की वैल्यू निकालकर वो दूसरी कंपनी की एसेट लायबिलिटी लेकर आपको शेयर की वैल्यू, और फिर उसके बाद आपका फेयर मार्केट वैल्यू निकलेगी। ये क्लियर हुआ? ये थोड़ा डिफिकल्ट पॉइंट था, अगर लेना है तो बताना तो पड़ेगा। डिफिकल्ट पॉइंट था, अगर क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं क्लियर हो तो सवाल पूछ सकते। मुझे लग रहा है मैं कुछ ज्यादा टेक्निकल हो गया हूं। अगला तो और टेक्निकल है जब मैं करूंगा सेक्शन 9B रेड विद 45(4). Yes, sir. One question on the share. If is fair market value to determine by the merchant banker in case of unlisted share, or we can take net asset value as on the date of transfer? Very good, very good. This is only for the share of the other company, not my company. Shares of the other company, I will have to calculate either net asset method, or I can take the discounted cash flow from merchant bank. I can do it, or I can do it. The 3 methods are there. Subject to the satisfaction of the AO, I can have that value, or I can have A minus L divided by O, और तीसरा discounted cash flow method on the basis of merchant banker valuation. ये तीनों अलाउड है सर, तीनों। ये किसके लिए करा रहे हैं? अपने शेयर की नहीं वैल्यू करा रहे हैं, उस इन्वेस्टमेंट की करा रहे हैं जो उसमें है। मेरी कंपनी में जो शेयर मैंने दूसरों को ले रखे हैं उसकी वैल्यू के लिए है, अपनी वैल्यू के तो वही है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, प्रॉपर्टी की वगैरह। आप बात को समझ रहे हैं? लोग यही गलती सोच रहे हैं, अपने वैल्यू की शेयर वो से करा रहा हूं। नहीं, मेरे वैल्यू की शेयर मुझे पता है कैसे निकालना है, कि मेरी जो प्रॉपर्टी है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, ज्वेलरी वगैरह है मार्केट वैल्यू, अदर एसेट बुक वैल्यू माइनस लायबिलिटी। लेकिन मुझे पास इन्वेस्टमेंट भी है इन शेयर ऑफ द अदर कंपनी, उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालते हुए मुझे 5627B में लिखा है कि आप रूल बनाइए 11UA2 में जाकर उसकी वैल्यू निकालिए, और उसकी वैल्यू निकाल के मर्चेंट बैंकर या वो होगा। क्लियर हुआ सर? ये क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Next, अब company आगे- has. Yes, sir. Next question. हाँ, What about on ESOPs? सर ईशॉप को तो आप वैल्यू निकालकर कितना भी डिस्काउंट दे सकते हैं, वो तो आपके हाथ में है। कंपनी लॉ प्रोवाइड करता है यू कैन गिव योर एम्प्लॉय, एंड ईशॉप में 2 टैक्स लगते हैं। एक तो डिफरेंस बिटवीन द एक्साइज प्राइस एंड द कॉस्ट, उसकी उसमें तो परक्विजिट माना जाता है, वो परक्विजिट माना जाता है फेस वैल्यू का। डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एट विच गिवन एंड द फेस वैल्यू, वो परक्विजिट माना जाता है। और जब वो ईसॉप बेचेगा तो उसको कैपिटल गेन होगा। ईसॉप में परक्विजिट माना जाता है इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। वो परक्विजिट की वैल्यू कैसे निकाली? एक्सरसाइज प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ द शेयर फेस वैल्यू।
वो इस सब की टैक्स टीडीएस काट के वो एम्प्लॉय टैक्स देगा उसके ऊपर, टीडीएस काटे। और जो इस सब आगे बेचेगा एम्प्लॉय, उस पर वैल्यू एट विच इज सोल्ड माइनस द एक्सरसाइज प्राइस, वो उस पर कैपिटल गेन देगा जब भी वो बेचेगा। ये होता है इस सब का। Okay, sir. Next question. Company has started in 2017. Two directors had retired and one new director joined retiring director, has transferred the share to new director at face value. Company has no asset nor investment in any company. Whether capital gain arises? ये एक चीज बड़ी गलत क्वेश्चन पूछते हैं। डायरेक्टर अलग चीज है, शेयर होल्डर अलग चीज है। अब डायरेक्टर की क्या मतलब? डायरेक्टर थोड़ी ट्रांसफर करता है, शेयर होल्डर ट्रांसफर करता है। डायरेक्टर तो there can be a director with only one share or anything. Director has nothing to do with the share. Company is a separate thing. शेयर होल्डर ने एक शेयर ट्रांसफर किए, ये बोलिए। ये डायरेक्टर की बात मत कीजिए, इट्स अ रॉन्ग क्वेश्चन। शेयर होल्डर has transferred the share to another person who may become director. I am not concerned. He has to transfer that share at the fair market value. And I've told you fair market value will be as per 50 CA read with U11, UA1. You will have to take the stamp duty value of immovable property if there is any in the company. You will have to take, if there is jewelry or anything, then the rest is book value minus the liability. You can calculate your market value. And then if there is no other thing, then market value will be the same as the face value. वैल्यूएशन तो करनी पड़ेगी ना, वो फेस वैल्यू पे कर दो अगर वो है। लेकिन अगर उसमें एसेट्स हैं तो यू हैव टू कैलकुलेट एज पर 11 UA1। 11 UA के बाद मार्केट वैल्यू होगी, उसी पे ट्रांसफर होगा, उससे बगैर नहीं। पहला पॉइंट समझ में आ गया? डायरेक्टर मत कहो शेयर होल्डर को। Yes, sir. In case of share buyback by company, can buyback be done at less than fair market value? Yes. 11 QA does not talk about anything. 115 QA says that you have to pay the difference between the issue amount paid and the issue price. But there no word is used that it should be transferred at fair market value. No problem. The difference between the price at which it is a consideration is given and the issue price will be liable to be taxed in the hands of the company at the rate of 20% plus surcharge 12% plus 4%. No problem. 115 QA does not talk about fair market value because it is buyback of share by the company. It is buyback by the company. And the word fair market value is not given. The only word is issue price, the price at which it is bought back. Difference that you have to pay tax under 115 QA. Clear, sir? Yes, sir. Yes, sir. Now we will proceed further, sir. We will stop the question and Okay. after discussion, we will again take the questions. I'm again taking a very important issue, very difficult issue. I'll try to make it as simple as I can. It has lot of issues. Earlier, what used to happen that there may be a retirement and there is a dissolution of a partner retires from the firm or the firm is dissolved. Earlier, there was section 45(4), old section, which said wherever there is a dissolution or otherwise, there will be a transfer and the firm will have to pay tax on the difference between the market value of the asset minus at which it is given to the partner. Gone are the days. Now, first thing, let me include, somebody was asking for LLP, firm includes LLP. Now, try to understand what has happened. One section 9B has been introduced. And 9B talks about deemed transfer. Before I talk to you 9B, let me tell you three words: specified person, specified entity, and reconstitution. इन तीनों का मीनिंग समझ लीजिए, फिर मैं आपको आगे बात करता हूं। मुझे ये नहीं पता, should I talk to you in Hindi, should I talk to you in mixed Hindi English, or should I talk to you purely in English? Because there may be some person who are not filing Hindi, or if it is mixed, I can continue with the mix because law otherwise will have to talk in English. I can't talk law in Hindi. But other points you want me to talk in
in mixed language, I can do in mixed language. If there are South Indians, they will say, I am not able to understand, then I'll keep only English language. Up to you. Nobody has told me so far. क्योंकि बाकियों को जब हिंदी इंग्लिश मिक्स में पसंद आता है, वो समझ जाते हैं कि क्या है. Yeah, mix. Can I continue with Sir, the mix is fine. Yes, sir. Yes, sir. Mix is fine. Yes, Okay. yes, mix. Now, specified person. Specified person का meaning है partner. If there is a firm, specified person means partner. If there is a AOP, specified person means member. जब कोई फर्म डिसॉल्व हुई तो स्पेसिफाइड पर्सन क्या होगा? अगर फर्म डिसॉल्व हुई तो पार्टनर, अगर एओपी डिसॉल्व हुई तो मेंबर. स्पेसिफाइड एंटिटी मींस if it is you are talking about firm, the specified entity is firm. If you are talking about AOP, specified entity is AOP. Instead of naming again and again partner of a firm or member of AOP, I will talk specified person of a specified entity. अब तीसरा पॉइंट सुनिए, रिकॉन्स्टिट्यूशन. डिसोल्यूशन तो सबको पता है, डिसोल्यूशन क्या होता है फर्म का या एलएलपी का, एवरीबॉडी नोस. पर रिकॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है वन और मोर देन वन पार्टनर रिटायर और स्पेसिफाइड पर्सन रिटायर, बट द फर्म कंटिन्यूस. एक या एक से ज्यादा, मैं पार्टनरशिप का एग्जांपल ले रहा हूं, एओपी को छोड़, एक या एक से ज्यादा पार्टनर रिटायर हुए लेकिन फर्म फिर भी कंटिन्यू कर रही है. संजय जी कंटिन्यू तभी करेगी ना जब कम से कम दो तो रहेंगे. अब दो से कम हो गए तो फिर फर्म फिर डिसॉल्व हो गई. तो आपने क्या, एक पार्टनर रिटायर हुआ, दो हुआ, दो से ज्यादा हुए, लेकिन फर्म में अभी भी कम से कम दो पार्टनर है, इसे फर्म कंटिन्यूस. इट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन. दूसरा रिकॉन्स्टिट्यूशन है कुछ पार्टनर रिटायर हुए और कुछ पार्टनर एडमिट हुए और फर्म फिर भी चल रही है, लेकिन एडमिशन पहले होना चाहिए, रिटायरमेंट बाद में होना चाहिए अगर दो से कम पार्टनर रह जाएंगे. ठीक है. और तीसरा केस, कोई रिटायर नहीं हुआ, नोबडी रिटायर्ड, नोबडी एडमिटेड, बट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल दिया. एक एडवोकेट फर्म है, संजय जी अभी ले रहे हो ना, संजय जी पार्टनरशिप में है, सपोज 95% ले रहे हैं और 5% एक जूनियर पार्टनर इनका ले रहा है. अब कहते हैं संजय जी अब मैं थोड़ा सीनियर हो गया हूं, अब मैं थोड़ा काम कम करूंगा, काम में ले आऊंगा, उसको कहूंगा तू ज्यादा कर, चल तेरे को 40 देता हूं, मैं अपना 60 कर लेता. इसे कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदली. अब उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर संजय जी ने कुछ पैसे मांग लिए तो टैक्स लगेगा. अगर संजय जी ने कोई पैसे नहीं लिए, उसको 40% दिया, 50 दिया, 70 दिया, 80 दिया, लेकिन कोई पैसे नहीं लिए तो कुछ नहीं होगा. क्लियर हुआ? क्योंकि वो वर्किंग पार्टनर बन गया. आप रिटायर, आप कह रहे मैं पार्टनर तो हूं लेकिन काम तू करे, लेकिन अगर आपने उसके पैसे लिए तो फिर वो रिकॉन्स्टिट्यूशन में टैक्स लगता है. क्लियर है संजय जी? अब मैं आगे बढ़ू. अब पहले एक सेक्शन 9 भी सुन लीजिए, फिर मैं एग्जांपल दूंगा. कहता है, संजय ध्यान सुना, वेयर ए स्पेसिफाइड पर्सन कैन बी पार्टनर और मेंबर ऑफ एओपी. Where a specified person receive during the previous year any stock in trade or capital asset from the specified entity in connection with dissolution or reconstitution of the specified entity. मैं यहां रुक के एक हिंदी से एग्जांपल देता हूं. एक फर्म चल रही है और एक पार्टनर वहां से रिटायर हो रहा है और पार्टनर को मैंने स्टॉक इन ट्रेड दे दिया रिटायरमेंट के टाइम पे, और कोई कैपिटल एसेट दे दी, और दोनों दे दिए. किसको? रिटायरिंग पार्टनर. ही इज रिटायरिंग, ही रिसीव्स फ्रॉम द फर्म ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एनी स्टॉक इन ट्रेड और कैपिटल एसेट और बोथ he has received from the firm. It is a transfer. वो कहता है ये ट्रांसफर माना जाएगा. पर रिसीव किस कारण लिया? इन कनेक्शन विद डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म. मेरे को पैसे मिले कब? एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन और एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन मैं रिटायर हो रहा हूं और फर्म ने मुझे स्टॉक इन ट्रेड दे दिया, कैपिटल एसेट दे दिया, या दोनों दे दिया, मैं रिटायर हूं.
मुझे मिले, वो कहता है ये ट्रांसफर है, इस पे टैक्स लगेगा, लेकिन ये डीम्ड ट्रांसफर है एंड द टैक्स विल बी पेड बाय ऑन दिस ट्रांसफर नॉट बाय द पार्टनर बट बाय द फर्म. फर्म कैन बी एलएलपी हाउस. उस एलएलपी या फर्म को टैक्स लगेगा जो जिसने स्टॉक इन ट्रेड दिया, जिसने वो कैपिटल एसेट दी, किसको? रिटायरिंग पार्टनर. अगर डिसोल्यूशन हुआ है फिर तो देना ही पड़ेगा, फिर तो वैसे ही एसेट दी जाएगी. अगर बेची ही नहीं एसेट तो एसेट दे दिया एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, एसेट दे दी, स्टॉक इन ट्रेड दे दिया. अगर रिटायरमेंट है तो भी एसेट दे दी, स्टॉक इन ट्रेड. कहता है ये डीम ट्रांसफर. लेकिन टैक्स किसको लगेगा? डीम ट्रांसफर को, फर्म को, एलएलपी को. पार्टनर को कुछ नहीं लगेगा. कैसे निकालेंगे टैक्स? जरा सुनिए ध्यान से. अगर मैंने स्टॉक इन ट्रेड दिया तो फर्म टैक्स देगी अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन. वो बिजनेस इनकम मानी जाएगी. कैसे कैलकुलेट करेंगे बिजनेस इनकम? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट स्टॉक इन ट्रेड माइनस कॉस्ट. फर्म के पास तो कॉस्ट है ना. फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट, इसमें बिजनेस इनकम मानी जाएगी. और ये टैक्स कौन देगा? पार्टनर नहीं देगा. पार्टनर के पास तो स्टॉक आ गया, लेकिन टैक्स कौन देगा? फर्म देगी. और फर्म ने लैंड भी दे दी उसको, और एसेट भी दे दी. लैंड की कीमत स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 2 करोड़ रुपए है, बुक्स में वैल्यू 60 लाख है. 2 करोड़, बुक्स में वैल्यू 60 लाख. जब वैल्यू देगा तो फर्म को फिर टैक्स लगेगा उस 2 करोड़ के ऊपर. कैसे निकालेंगे? कैपिटल गेन निकालेंगे फर्म का सेक्शन 45(1) में. एज इफ संजय जी इट हैज बीन सोल्ड टू द आउटसाइड. मैं क्या कर रहा हूं अनुरुद्ध जी? ऐसे मैंने किसी बाहर को बेच दिया, उसको बेचा, ऐसे ही समझिए 2 करोड़ का सेट पार्टनर को बेच दी लैंड. तो टैक्स किसको देना है? फर्म को देना है. कैसे निकालना है? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 2 करोड़, कॉस्ट कितनी है? मैंने कहा 40 लाख. इंडेक्स कर लो, चलो 60 लाख. 1 करोड़ 40 लाख पर टैक्स फर्म देगी, मैं नहीं दूंगा. फर्म देगी, मैं नहीं दूंगा. ये रिटायरमेंट हो या डिसोल्यूशन. अब देखिए क्या हुआ. एक आदमी रिटायर हुआ, पार्टनर रिटायर हुआ. स्टॉक था सर उसके पास 50 लाख. संजय जी स्टॉक लगा 50 लाख. पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसको वो स्टॉक दे दिया जिसकी मार्केट वैल्यू 60 लाख है. वो ले गया पार्टनर, स्टॉक दे दिया 60 लाख का. तो पहले फर्म 60 लाख माइनस 50 लाख, 10 लाख के ऊपर टैक्स देगी. क्लियर हो गया? दूसरा, उसको लैंड दे दी, 2 करोड़ मार्केट वैल्यू है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, बुक वैल्यू 40 लाख है, इंडेक्स कॉस्ट 60 लाख है. तो 1 करोड़ 40 लाख रुपए पे टैक्स कौन देगा? संजय जी फर्म देगी. मैं नहीं दूंगा, फर्म देगी. पार्टनर के पास तो वो आ गया स्टॉक कितने का? 60 लाख वाला. और पार्टनर के पास लैंड आ गई 2 करोड़ की. जब वो आगे बेचेगा तो टैक्स निकलेगा. अभी तक मैंने कुछ नहीं दिया. ये क्लियर हुआ पहले यहां तक, क्योंकि मैं बड़ा मुश्किल भी करने जा रहा हूं. मैंने एग्जांपल दी कि मैं रिटायर हो रहा हूं, या डिसोल्यूशन है, और डिसोल्यूशन में मुझे फर्म से स्टॉक मिल गया एंड लैंड मिल गई, या रिटायरमेंट में मिल गई. मुझे कोई टैक्स नहीं देना, टैक्स फर्म ने देना है. ये सोचकर जैसे किसी बाहर वाले को बेचा है, वो 50 लाख का स्टॉक है, मार्केट वैल्यू 60 लाख है, तो 10 लाख के ऊपर टैक्स. मुझे 60 लाख का मिला, लेकिन वो 10 लाख पे टैक्स कौन देगा? फर्म देगी. लेट्स से 30% देगी. छोड़ दो सरचार्ज वगैरह, 30% फर्म ने दिया, तो 10 लाख पे फर्म ने 3 लाख रुपए टैक्स देना. मैंने कुछ नहीं देना. अब आइए, फर्म ने मुझे लैंड दे दी 2 करोड़, 2 करोड़ की लैंड. फर्म ने खरीदी कितने थी? 40 लाख. इंडेक्स कॉस्ट क्या है? 60 लाख. तो फर्म को कितना कैपिटल गेन हुआ सर? 1 करोड़ 40 लाख. उसमें 20% गिन लीजिए, सरचार्ज वगैरह छोड़ दीजिए, 28 लाख रुपया फर्म उसके ऊपर टैक्स देगी. ये क्लियर हो गया यहां तक? मैंने क्या करा है? सेक्शन 9B read with section 28 and also read with section 45(1). As if firm is an outsider, फर्म ने अपने पार्टनर आउटसाइडर है, ये बेचा है. तो मैं कई बार कहता हूं श्रीपत जी, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फर्म में कम से कम 2 नहीं 3 पार्टनर जरूर होने चाहिए. हो सकता है आपने लिख दिया कि
एक्स के मरने के बाद, एक पार्टनर के मरने के बाद उसके लीगल हेयर को हम ले लेंगे, क्या पार्टनर। लेकिन रुकिए, अगर दो ही हैं तो जिस दिन उस पार्टनर की डेथ होगी एक ही पार्टनर रह जाएगा, चाहे अगले घंटे में आप उसके लीगल हेयर को ले लीजिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है ये डिसोल्यूशन का केस है, रिटायरमेंट का केस नहीं, क्योंकि पार्टनर एक ही रह गया। अनुरोध जी, पार्टनर एक ही रह गया, क्योंकि मर गया तो दूसरा तो एक ही रह गया ना, जब तक दूसरा आएगा नहीं, वो तो बाद में आएगा। तो इसलिए 3 पार्टनर होंगे, चाहे उनको 0.1% दे दो, 1% दे दो, फर्म में किसी की डेथ भी हो जाए फिर भी फर्म कंटिन्यू करेगी और कुछ होगा नहीं। लेकिन नहीं तो वो डिसोल्यूशन का केस होगा, और डिसोल्यूशन के केस में जो भी एसेट पार्टनर को मिलेगी उस पर फर्म को टैक्स देना है, जो भी स्टॉक पार्टनर को मिलेगा उस पर पार्टनर को टैक्स देना। इतना क्लियर हो गया सर? तो मैं आगे बढ़ू। रिटायरमेंट भी मैंने कर दिया, क्लियर हो गया सर? मेरे को क्या क्या मिला? स्टॉक मिला, ध्यान रखना संजय जी, जरा एक कागज में नोट कर लेना, मैं भूल ना जाऊं। स्टॉक मिला 60 लाख, मुझे लैंड मिली 2 करोड़ की, ठीक है सर? मिली, ठीक है, रख दिया, लोड कर लिया, आगे Yes, चल। sir. Yes, sir. अब ये चलता हूं सर। अब आइए सेक्शन 45(4). अब ये खतरनाक सेक्शन है। 45(4) कहता है वेयर ए स्पेसिफाइड पर्सन, लेट अस से पार्टनर, receives during the year any, अब सुनिए क्या लिखा है संजय, क्या लिखा है? एनी मनी और कैपिटल एसेट और बोथ, या स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, मनी और कैपिटल एसेट और बोथ एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन मीन्स पार्टनर रिटायर हो रहा है, उस वक्त पार्टनर को क्या दिया? आपने मनी दे दी, लेट्स से 1 करोड़ रुपया, साथ में एक एसेट दे दी, लैंड 2 करोड़ की दी ना, वो जो लैंड मैंने बताया अभी, वही सवाल को ले लो। स्टॉक दिया, स्टॉक को अलग रखेंगे, 1 करोड़ की उसको मनी दे दी, 2 करोड़ का उसको क्या दिया सर? लैंड दी, 3 करोड़ दिया। तो कैपिटल गेन कैसे निकलेगा? कहता है कैपिटल गेन विल बी ए इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस डी, बी प्लस सी माइनस डी। ये क्या चीज है? ए इज कैपिटल, वो हमने निकालना है, जो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है। बी इज सम ऑफ मनी, जो मैंने दी 1 करोड़ रुपया। सी इज वैल्यू ऑफ द एसेट 2 करोड़ रुपया, ठीक है सर? 3 करोड़ हो गया, माइनस डी, डी इज कैपिटल आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। उसका कैपिटल कितना था आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। अब मैं ये एग्जांपल लेता हूं, मैंने 1 करोड़ रुपया उसको क्या दिया संजय जी? कैश। 2 करोड़ क्या दिया? लैंड। 3 करोड़ हुआ कैपिटल। अगर उसका आउटस्टैंडिंग 1 करोड़ 20 लाख है तो सवाल पूछा जाएगा 80 लाख फालतू क्यों दिया? जब उसका कैपिटल 1 करोड़ 20 लाख है, आप उसको 3 करोड़ क्यों दे रहे हैं? अभी कैपिटल आउटस्टैंडिंग निकालूंगा, कैसे निकालना है? सबसे मुश्किल काम तो कैपिटल आउटस्टैंडिंग निकालना है, लेकिन पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं। हमने उसको 3 करोड़ दिया, 1 करोड़ रुपया कैश, 2 करोड़ रुपए कैश वाला चेक वगैरह जो भी, 2 करोड़ रुपए की लैंड। लेकिन उसका निकलता तो कैपिटल सिर्फ 1.5 करोड़ है या 2 करोड़ है, तो एक्स्ट्रा क्यों दिया? 3 करोड़ के बदले उसकी कैपिटल निकलती है, चलो मैं कैपिटल लेता हूं 1 करोड़ 80 लाख, तो 1 करोड़ 20 लाख क्यों फालतू दिया? संजय जी क्यों दिया? आप क्यों ले जा रहे हैं? हो सकता है आप कहेंगे मुझे गुडविल दो, मेरी फर्म की गुडविल है, मुझे वो दो, मेरे गुडविल दो। हो सकता है वो फर्म है जिसके पास ट्रेड नेम है, ब्रांड नेम है, कोई इंटेंजिबल एसेट है, लाइसेंस है, वो कहता है ये लाइसेंस की कीमत आपने डेप्रिशिएट कर दी, लेकिन मार्केट वैल्यू तो ज्यादा है, उसका डिफरेंस मुझे दो। वो कह सकता है बाकी भी तो एसेट पड़ी है फर्म में, और भी लैंड है, उसमें भी तो अप्रिसिएशन हुआ है, आज तक का अप्रिसिएशन का हक तो मेरा भी है। मांगेगा कि नहीं मांगेगा? जाने से पहले मैं फर्म से जब जा रहा हूं, रिटायर हो रहा हूं, तो मैं उससे 3 चीजें कहूंगा, भैया गुडविल दो, मेरे वजह से तो काम चल रहा था, फर्म का नाम है, गुडविल दो। इसलिए मैंने उसको एक्स्ट्रा दे दिए, 3 करोड़ माइनस 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 20 लाख। ये कैपिटल गेन है, 1 करोड़ 20 लाख। कौन सा कैपिटल गेन है श्रीपद जी?
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। गुडविल के केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, पूरे पे टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर हो गया? फिर क्या जी, मैंने उसको दिया, वो ट्रेड नेम था, लाइसेंस था। अब इतने इतने बड़े कंपनी का ब्रांड चलते हैं, इतना बड़ा ब्रांड नेम है, और मैंने उसकी वजह से कहा अब ब्रांड तो तुम्हारे पास आ गया, मैं तो जा रहा हूं, तो ब्रांड की इतनी वैल्यू है, मुझे उसका शेयर तो दे दो। लेकिन ब्रांड को तो आपने डेप्रिशिएट कर रखा है, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट को 25% डेप्रिशिएशन मिलती है। कहता ना, मुझे तो आज की वैल्यू का 40, मेरा शेयर 40% है, 40% एप्रिसिएशन दे दो उसकी। अगर वो 40% मांग रहा है ना सर, तो वो जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू एसेट है, इसलिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, वो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा अगर वो डेप्रिसिएशन मांग रहा है। ये भी ध्यान रखना। 1 मिनट सर, अगर वो डेप्रिसिएशन मांग रहा है तो ये भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। ये समझ में आया? Yes, Yes, sir. डेप्रिसिएशन भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अब तीसरा कह रहा है, अरे वो लैंड पड़ी है इतनी पुरानी, जिसकी बुक वैल्यू तो 70 लाख है, आज 4 करोड़ की हो गई है, जो पुरानी पड़ी है, उसका भी तो शेयर मेरा बनता है। मांगेगा नहीं मांगेगा सर? मांगेगा कि नहीं मांगेगा, ये बता दो। Yes, sir. मांगेगा कि नहीं मांगेगा? अरे जो एसेट वो छोड़ के जा रहा है, उस पर अप्रिसिएशन उसका है कि नहीं है संजय जी? कोई छोड़ के जाएगा? मैं छोड़ दूंगा? अरे भैया 4 लैंड खरीदी थी, 1 लैंड तो मैं ले गया, बाकी 3 लैंड पड़ी है, उसका एप्रिसिएशन तो मुझे दो। संजय जी हाई नहीं कर रहे, वो रिटायर होना ही नहीं चाहते। हाँ क्यों करें? Yes, sir. Yes, संजय sir. जी लाइन में नहीं है, वो लाइन में नहीं है, उनका सिर्फ फोटो नजर आ रही है, लेकिन करेक्शन नहीं है। मेरी बात समझ गए सर? कोई छोड़ेगा? आप बताइए अनुरोध जी, आप छोड़ेंगे? अगर पार्टनरशिप से रिटायर हुए नरेंद्र जी छोड़ेंगे? आप कहेंगे 3 चीजें लूंगा, एक गुडविल मैं लूंगा, मैं जो एप्रिसिएशन इन द ब्रांड नेम ट्रेड नेम मैं लूंगा, जो एसेट बची हुई है उसका एप्रिसिएशन आज तक, फ्यूचर नहीं लूंगा, आज तक एप्रिसिएशन मांगोगे कि नहीं मांगोगे? मांगा Yes, तो sir. कैपिटल गेन है। तो आपने क्या निकाला? हमने कहा हमने आपको दिए 4 करोड़। कितने दिए थे मैंने? 3 करोड़। और आपका कैपिटल कितना निकला? 1 करोड़ 80 लाख। तो 1 करोड़ 20 लाख कैपिटल गेन है। ठीक है सर? अगर इसमें गुडविल का अमाउंट है, उतना गुडविल में ले जाओ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सारा ही लैंड का है, तो उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कौन देगा? फर्म देगी, मैं कुछ नहीं दूंगा। फर्म देगी, मैं कुछ नहीं दूंगा। लेकिन अगर 1 करोड़ 80 लाख निकलता था और मुझे 1 करोड़ 80 लाख ही मिला, तो फिर कोई फर्म को कोई टैक्स नहीं देना। टैक्स तो इसलिए देना है कि वो प्रभु जी कह रहे हैं कि आप मेरा कैपिटल दो जो आउटस्टैंडिंग है, जिस दिन मैं रिटायर हुआ हूं उस दिन तक का मुझे प्रॉफिट का शेयर दो, और उसके बाद मुझे वो एप्रिसिएशन दो जो, क्योंकि मैं रिटायर हो रहा हूं। संजय जी क्लियर हुआ? संजय जी शायद जी सर। क्लियर हो गया आज तक? यहां तक Yes, sir. आपको Yes, क्लियर हुआ सर? मैं आगे चलूं? yes, sir. अब Yes, sir. देखिए, अब देखिए क्या होगा। अब कैपिटल आउटस्टैंडिंग निकालना सबसे मुश्किल काम है। कैसे निकालेंगे? एक आदमी रिटायर हो रहा है 1 जनवरी को, आपके पास कैपिटल उसका 31 मार्च का तो है, पिछले साल। वो ये नहीं कहेगा मेरे को आज 31 दिसंबर तक का जो प्रॉफिट है उसका शेयर मुझे दो। मांगेगा नहीं मांगेगा अनुरोध जी? मांगेगा? चौहान साहब बताइए, मांगेगा कि यस नहीं? सर, यस सर, जरूर मांगेगा। ऑन कर लीजिए। हाँ, तो अब हम कहते हैं उसका ओपनिंग कैपिटल, सपोज कीजिए उसका ओपनिंग कैपिटल 1 करोड़ था, प्रॉफिट 31 दिसंबर तक 50 लाख आया, और उसका शेयर 40% है, तो 20 लाख मांगेगा कि नहीं मांगेगा? मांगेगा जी। सर ऑन रखिए, जरा ध्यान रख, मजा आएगा। ऑन रखिए सर, मांगेगा? चौहान साहब ने ऑफ कर दिया। नरेंद्र जी मांगेगा कि नहीं? मांगेगा ना सर, मांगेगा। मांगेगा, मांगेगा. रुको रुको, फर्म कहेगी ठहर जा, इस 50 लाख के पहले टैक्स तो दे, टैक्स तो हमने देना है। अरे वो 50 लाख जो प्रॉफिट हुआ 31 दिसंबर तक नरेंद्र जी, उसमें 30% टैक्स तो निकालो, वो तो फर्म को देना है। बाकी कितना बचा? 50 में 30% निकल गया, 15 लाख। 35 का 40% मांगेगा, तो 14 लाख ये दे दे मेरे को। मांगेगा कि नहीं मांगेगा? यस।
लेकिन आप उसे ये नहीं कहोगे ओ भाई तू स्टॉक लेके जा रहा है उसके पैसे तो दे मुझे 60 लाख रुपया, कहेगा नहीं कहोगे 1,15,00,000 में से 60 लाख रुपया स्टॉक का वापस ले लो तो 55 लाख बच गया, ठीक है ना। अब वो कहेगा रुको, वो जो बिल्डिंग मुझे दी है, जो बिल्डिंग जो 2 करोड़ की है, कितने की थी 2 करोड़, और उसकी इंडेक्स कॉस्ट थी 60 लाख, 1,40,00,000, उसमें भी तो मेरा शेयर बनता है, बनता नहीं बनता। वो 1,40,00,000 में वो कहेगा रुको पहले इसके पे टैक्स निकाल लूं, तो 1 करोड़ प्रॉफिट कितना हुआ ये बताइए। 2 करोड़ का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, 40 लाख की बिल्डिंग थी, 60 लाख का इंडेक्सेशन है, तो प्रॉफिट कितना हुआ बोलिए सर। वो ऑन कर लीजिए, कोई बात नहीं है। 1,40,00,000 हो गया। जी गलत है, टैक्स तो 1,40,00,000 नहीं है, 160 है। अरे वो तो इंडेक्सेशन करा गया उसके लिए, कैपिटल गेन के लिए। प्रॉफिट तो 160 है, 2 करोड़ माइनस 40 लाख। आप 1,60 क्यों कह रहे हैं? तभी तो पूछा मैंने, 1,40 नहीं है, 1,60 है। लेकिन टैक्स इतना दिया गया 1,40 में, टैक्स 1,40,00,000 में दिया गया, 20% 28 लाख रुपए। करेक्ट सर? करेक्ट सर। 28 लाख रुपए लेस कर दो और बाकी तो मुझे दे दो। 1,60 में से 28 गए, 1,32,00,000, उसका 40% मुझे दे दो, कितना आया 52,80,000, वो भी तो दो मुझे। क्लियर हो रहा सर? है तो मुश्किल, है तो मुश्किल। तब उसका कैपिटल आउटस्टैंडिंग निकलेगा, और ये करके आपका कैपिटल आउटस्टैंडिंग अगर निकल रहा है 2 करोड़, तो आपने उसको 3 क्यों दिए? 1 करोड़ रुपए टैक्स दे दो। कौन देगा? फर्म देगी, मैं नहीं दूंगा। क्लियर हुआ? ये 45(4) है, कंट्रोवर्शियल नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड इशू है। इट्स नॉट अ कंट्रोवर्शियल इशू, इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड इशू। अगर आपने नरेंद्र जी उतना ही दिया होता, नरेंद्र जी उतना ही दिया होता जितना उसका बनता है कैपिटल, जितना नरेंद्र जी, तो कोई टैक्स नहीं लगता, फिर तो कोई टैक्स नहीं फर्म को। उसका निकलता था 1,40,00,000, आपने 1,40,00,000 दिया, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो चला जाएगा, छोड़ के चला जाएगा, वो कहेगा है पहले पैसे दो पूरे तब निकलूंगा, ऐसे थोड़ी कोई निकल जाएगा। तो ये वाला पॉइंट 45(4) का है। ये क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सर? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं ये चाहूंगा, 1 घंटा 20 मिनट हुआ है, कोई भी सवाल पूछ लीजिए, क्योंकि टाइम भी लेना है। कोई भी सवाल इनकम टैक्स का है पूछते जाइए, मैं जवाब देता रहूंगा। या कोई और इशू डिस्कस करना है तो मुझे बोलिए, है तो मेरे पास बहुत इशू, लेकिन टाइम की कंस्ट्रेंट होता है और वो बड़ी दिक्कत है। आप मेरे से कोई भी सवाल पूछ लीजिए ऑन इनकम टैक्स, मैं उसका जवाब देता रहूंगा। लेकिन एक वहां पर कोऑर्डिनेटर बैठ जाए, ही शुड कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम मी एंड आई विल कीप ऑन रिप्लाइंग दैट क्वेश्चन। चलिए। Yes, sir. Yes, yes. I say. प्रश्न विचार. संजय जी आप मूड में नहीं है आज? संजय Yes, जी sir. नजर आ रहे, पता नहीं फोटो Yes, लगी sir. हुई क्या Question. है? Yes, हाँ sir. जी Uh, सर, वो ऑन करो संजय जी। mic on करो. चलिए बोलिए सर, क्वेश्चन बोलिए। Yes, sir. Question. In LLP purchase a land wherein the partner are confirming party to the transaction. Is there any capital gain in the hands of partner on the date of सवाल ही खत्म नहीं registration of होता। purchase? Question does not arise. Always in the case of a, I'm not talking about LLP. In the case of a firm, the land is not taken in the name of the firm. The land is taken in the name of the partner on behalf of firm. On behalf of firm. It is always taken in the name. But in the case of LLP, the LLP as a separate entity, you should buy in the name of LLP. But there is no problem. Even in the case of a company, if you have bought anything on in the name of a director, but if it is taken into the company or if it is taken into the LLP, there is no problem. No tax, no tax. If it is fund belongs to firm, fund belong to LLP. If the fund belongs to me, then I have brought into the business. Then it is a different thing. Then 40/3. That will 56/10. लेकिन अगर फंड फर्म के हैं और या LLP के हैं, लेकिन आपने पार्टनर के नाम या उसके नाम ले लिया और अपनी बुक्स में दिखा दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्म की बुक्स में है तो कोई दिक्कत। हाँ जी। Okay, next आगे question. समझ। Yes, sir. Next question. If the asset and liabilities of ABC firm is taken over by another firm XYZ
and ABC firm cease to exist, then what would be the consequence? डिसोल्यूशन or है partner- सर, ये डिसोल्यूशन है. अब सारे पार्टनर हट गए ना, डिसोल्यूशन का केस है, उसको भेज दिया तो आपने डिसॉल्व कर दिया, पार्टनर को मिला के उनको चला गया. अगर दूसरे को चला गया तो वो सेल है, वो तो वैसे ही आपको मारे, उसकी कैपिटल गेन निकालना है, वो तो सेल है. आप श्रम सेल भी कर सकते थे. आप उसको बेच रहे हैं तो सारी एसेट की मार्केट वैल्यू जो भी हिसाब से उससे बेचिए, वो कोई दिक्कत नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं. आपके लिए डिसोल्यूशन है. अगर आपको मनी मिली तो प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई एसेट मिली, मनी भी मिलेगी तो भी केस है. डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन में मनी का नहीं है, रिटायरमेंट में मनी का. डिसोल्यूशन है तो फर्म ने टैक्स दे दिया. इफ द फर्म हैज पेड टैक्स, यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्स एट ऑल. Sir, in case of share buyback in last question, is the difference between which the company allotted shares and buyback price on which tax has to be Issue share paid? is the company allotted share is the issue price, issue, and buyback price. Buyback price minus issue price is the taxable income on which tax will be paid by the company. One is buyback price, another is issue price. Buyback price minus issue price, the difference between that will be tax will be payable by the company under section 115 QA. और बोलिए. 1 minute, sir. Farmers Agri Cooperative Society loan issued to member for agriculture. Then the society collect is loan from the member and deposit this amount to the society bank account in cash in whole year. Then IT department issue the notice to the farmer society. What to be done? Question again, sir, because they are talking about a question where the point is a personal question. Is it a credit and thrift society? What kind of a society it is? I don't know. If there are members of one society, if you can come to the question again, I will answer. Come to the question again. Slowly. Yes, sir. Farmer Agri Cooperative Society. Farmer Agri Cooperative Society. Okay. Yes, sir. Loan issued to the member for agriculture. Okay. Then the society collect the loan from member and deposit that amount to the society bank account. Who collects the loan from member? The loan is repaid in cash. Say differently in a different way. Yes, sir. Yes, sir. Loan repaid in cash. Loan is repaid in cash. Yes. There are, in the case of agriculture income, if you taken a loan from now it's a cooperative society. Otherwise, if a farmer, if you have an agriculture income and you have taken a loan and you are also an agriculturist income, in that case, section 269T is not applicable. You are talking about 269SS and 269T. The loan is given in cash. The loan cannot be given in cash, but a farmer can give a loan to the another farmer in cash. But now it is a cooperative society you are talking about. In that case, 269SS, 269T is applicable only when you are not covered under exemption. अगर exemption में है तो एक बार exemption देख लेना 216SS की, 269T की, otherwise ये covered. एक बार मुझे exemption वाला चेक करनी है. कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई exemption नहीं है. हाँ, लोन एग्रीकल्चर लोन का आपस में है, ये बता, फिर भी चेक कर लो. 269, 269 SS और 269T देख ली. चलिए आगे. Yes, sir. Next question. Cash seized under section 132 in July 2021. Notice has been received under section 143(3) for financial year 21-22 and under section 148 for the financial year 2021. Both are received recently. Is the notice valid? देखिए मैं आपको बोलूं, 143(3) असेसमेंट का है. वो करंट ईयर की तो असेसमेंट होनी है. पुराने के लिए तो 148 ही होना है. करंट ईयर अगर है, द ईयर ऑफ सर्च, देयर इज ए 143(3). अर्लियर ईयर देयर इज 148. इनकम escaping a bit during this search. So both are valid, but 143(3) सीधा थोड़ी आता है, 143(2) आता है. How do you say 143(3)? It is 143(2). and earlier year का जो income escaping assessment है 148 आता है. 143(3) तो assessment है. Notice is never in 143(3). Notice is always in 143(2).
and there in the case of 148(1) along with 142(1) comes. कुछ गलती है, मैं इस पर लिखने में गलती है कुछ. Okay, sir. Okay, sir. In case of death of a partner, the legal heir getting the share in the partnership firm will be taxed. I told you, if there is a death of a partner and partnership deed says after my death, where a legal heir will be taken as a partner, then if there in that case there are only two partners, then so it is a case of dissolution. If there are more than two partners, one partner dies, then it is a case of retirement. I have told you, first section 9B read with 28(1) and 45(4) will be 45(1) will be applicable. And if he gets legal heir more money, because he's an outside retirement, it is a case of retirement. Legal heir taken as a partner means is a definite thing. The partner who has died, he has received the money. The tax is in the hands of the firm, not in the hands of the legal heir. Yes, sir. You are taking a legal heir as a new partner. There is a partner who has died in case of reconstitution. It is a case of reconstitution because firm continues. Sir, next question. Partnership firm having the land as a stock in trade enter into a joint development agreement, and as per agreement, they will receive 40% of construction area. So when tax will be arise on the date of transfer of land or receive the area or sale of unit. First point is, when you are going for a joint development agreement, I have to first ask the question, was it a capital asset or stock in trade? If it was a capital asset, you please convert into stock in trade and then enter into a joint development agreement. First thing. And if it is already a stock in trade, no problem. Now what will happen is, you have entered into a development agreement, you have only land. You have not transferred the land to you. There is a development agreement. The person who is developing will have work in progress in his balance sheet because he is not the owner of the land. Owner of the land is A. Developer is B. B will show in his balance sheet work in progress. And whenever the sale arises, both will have to pay tax proportionately depending upon the agreement entered into between them. अगर स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड कर लिया था तो फिर जब भी बिकेगा दो टैक्स लगेंगे, एक कैपिटल गेन और एक बिजनेस इनकम. लेकिन पहले से ही स्टॉक इन ट्रेड था तो मैं लैंड लेकर सो जाऊंगा, वो बिल्डिंग बनाएगा और जब जब बिकेगा रेवेन्यू शेयरिंग उस पर टैक्स लगेगा. One minute, sir. वैसे सेशन है कितने टाइम का सर? मैंने बताया, मैं भूल गया, पूछा ही नहीं. Up to 1 o'clock, sir. Sir, till 1 o'clock. हैं? 1 o'clock. Another half an hour, no problem. Another half an hour. Last. Because I have to go by 1 o'clock sharp. Hanji, I hanji, have hanji, to sir. go for a Please, lunch please. at 1 o'clock sharp. I have no problem up to 1 o'clock. But please leave me at 1 o'clock because I have a meeting at 1:30, lunch meeting at 1:30. And it will take about 25 minutes to reach there. So no problem. You can ask any question. Whether section 50C applies to the development rights? Sir, 50C applies to leasehold right. Development right का क्या मतलब? Development right वाला तो ओनर ही नहीं है. आपके पास प्रॉपर्टी है, you have entered into an agreement, you are selling the land. When you sell, you will have to apply for 43CA, that is market stamp duty value. आपको तो stamp duty value पे ही बेचना है. Even the landowner, stamp duty value से कम तो बेच नहीं सकता stock in trade वाला. दोनों के लिए stamp duty value है 43CA. Yes, sir. 1 minute. In case of future and option trading, how to calculate turnover of for purpose of tax बहुत audit? सिंपल है सर. हर ट्रांजेक्शन में देखिए टर्नओवर तो क्या माना जाता है, ध्यान से सुनिए. ऑल माइनस एंड ऑल प्लसेस दोनों को ऐड कर दीजिए, ये टर्नओवर माना जाता है फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट. ईच ट्रांजेक्शन का माइनस, ईच ट्रांजेक्शन का गेन. ट्रांजेक्शन जब कंप्लीट होती है दोनों को ऐड कर दीजिए, ऑल माइनसेस ऑल प्लसेस, इट इज अ टर्नओवर. लेकिन टैक्स किसका देना है?
प्लस राइट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के, माइनस डेबिट साइड में जाएगा, डिफरेंस में टैक्स देना। ये बिजनेस इनकम है, ये बिजनेस इनकम है। टैक्स देने में ऑल प्रॉफिट माइनस ऑल लॉसेस, बट फॉर द पर्पज ऑफ टर्नओवर, एग्रीगेट ऑफ ऑल लॉसेस एंड एग्रीगेट ऑफ ऑल प्रॉफिट, दोनों को जोड़ दीजिए, टर्नओवर कैलकुलेट होगा। Sir, next question is, in JDA entered on 20th of February 18, refundable security deposit received as mentioned in the agreement. Income tax authorities deemed it as consideration for transfer and tax it, relying What on is the refundable, sir? What is refundable? You have written in advance. How can you say refundable? Because it is a case of entering in. ये सेक्शन 45(5)(a) की बातें कर रहे हैं। 45(5)(a) में लिखा है, अगर आपके ओनर ऑफ लैंड और बिल्डिंग हो, यू एंटर इनटू अ स्पेसिफाइड एग्रीमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग प्रोजेक्ट, इट इज ट्रीटेड एज ए ट्रांसफर। लेकिन जब वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू होगा, उस वक्त कैपिटल गेन लगता है 45(5). जब कैपिटल गेन लगता है, उसमें शेयर ऑफ द लैंड, शेयर ऑफ द बिल्डिंग प्लस द मनी यू रिसीव इज ट्रीटेड एज कंसिडरेशन प्राइस। अब ये मनी आपने रिसीव करी है कि नहीं करी, उसमें टीडीएस कटा है कि नहीं कटा? Sir, it is in the joint development agreement, it is mentioned that it is a refundable security deposit. अरे सर, रिफंडेबल ही एडजस्टेबल होगा। Okay, रिफंडेबल किस तरह हो गया जब एग्रीमेंट कर रहे still हैं? if it is adjustable, then that is to be taxed after the completion. टीडीएस कटा था नहीं कटा था, ये बताइए। Sir, question. चलिए मैं आगे बोलता हूं, अगर ये एडजस्टेबल है तो मैं टैक्स तो कर नहीं रहा, अभी जब आपको मिला तब आपको टैक्स लगना है। अगर आपने एडजस्ट कर लिया, आपको टैक्स कब लगना है? आप इंडिविजुअल है कि एचयूएफ है, कौन है? Sir, it is not mentioned in the question. It is the question of Mr. Santosh Maniar. If you want, you can answer the He can details. raise a hand and ask, you can उसको अनम्यूट कर दो और वो कर आप पूछ लेंगे। हाँ सर, वो मणियार जी बोल रहे हैं वो इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल के लिए 45(5)(a) लगता है। ऐसा कौन सा रिफंडेबल, मैंने तो आज तक सुना नहीं है कि रिफंडेबल होगा। अरे जब उसको मिल रहा है तो रिफंडेबल क्या होगा? उसको एडवांस, उसको पैसे दे दिए, या तो उसको दिए होगा रहने के लिए पैसे, क्या चीज है बताइए ना सर। जो Sir, in Maharashtra, sir, it is in Maharashtra, it is a procedure that every joint agreement. As far as Maharashtra is concerned, I am not concerned because there are so many apartment act this act. I will not speak in that between कि वो एडजस्टेबल कैसे हो गया। आप तो या तो वो कर रहे होगे टीडीआर के राइट, आप कुछ और बोल रहे हैं। आपके डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया है कि उसने बिल्डिंग तोड़ के आपको कहा आप ऑलरेडी ओनर थे, आपको बड़ा प्लॉट दे देंगे या बड़ी जगह दे देंगे। कैसा एग्रीमेंट है मुझे नहीं पता। या आपकी लैंड है, उसकी वो बिल्डिंग बनाएगा, तो महाराष्ट्र में क्या चीज हुई उसमें? Sir, क्या है? sir, here in Maharashtra, it is a routine practice. If you give land for joint development, builder gives you security deposit. Say it's a 5 crores rupees. After completion of projects, अगर आप सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस करेंगे तो उसका कोई लेना देना नहीं है। इफ यू आर रिफंडेड, इट इज नॉट अ केस ऑफ एनीथिंग। अगर आपने वापस कर दिया तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट है रिफंडेबल, तो उसमें टैक्स क्यों लगेगा? या तो उन्होंने देखा नहीं, उसने देखा एडवांस आया हुआ है, उसमें आपने कुछ टीडीएस काटा है, क्योंकि डेवलपमेंट एग्रीमेंट में 194 IC में टैक्स कटता है। अब मुझे नहीं पता क्या किया है। अगर आप डेवलपमेंट एग्रीमेंट करते हैं तो मनी मिलता है, तो 194 IC में 10% टैक्स कटता है 45(a) की वजह से। yes, sir, yes. समझिए ना। अब मुझे तो फैक्ट नहीं पता ना सर, हमारे सामने फैक्ट नहीं। अगर टीडीएस कटा है तो ही तो उसने सोचा होगा कि ये क्यों नहीं माना इनकम। अगर रिफंडेबल है तो टीडीएस क्यों कटा? सर नहीं कटा है टीडीएस, अभी उन्होंने जो क्लैरिफाई किया उसमें। और द इशू इज द आईटीओ हैज रिलाइड ऑन द आईटीओ तो लर्नेड आईटीओ होते हैं सर, उनको क्या खबर दो ना कि इतने एडजस्टेबल यार, खबर दो कि ये है, तो यू हैव टू रिप्लाई टू द शो कॉज नोटिस। सर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज लैंडलॉर्ड गिव land to developer for development. Developer has registered some flat in the name of landlord as per their sharing of flat with the developer. The same is reflecting in PAN of the landlord, but landlord hasn't received any money from developer.
how and when the income tax is applicable. 45A बड़ा क्लियर है, आप हाँ। गलत बोल रहे हैं। जिस दिन आपने लैंड दी वो ट्रांसफर हो गया, जिस दिन आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू मिला उस दिन जो आपको शेयर ऑफ लैंड है और शेयर ऑफ बिल्डिंग है उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। लॉ यही तो कहता है, 45(5) में क्लियर कट है कि हमने शुरू में आपको छोड़ दिया, लेकिन जिस दिन आपको लैंड मिल गई आप उसका 54 लेना चाहते हैं ले लो, 54F लेना चाहते हैं तो ले लो, लेकिन आपको शेयर मिल गया है और जो शेयर मिला उस पर टैक्स लगेगा ईयर इन विच कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज इशूड टू यू। ये तो 45(5) में क्लियर कट लिखा है जी। The next question is, in case of purchase of property, agreement value is 1.7 crore. Customer is deducting tax on it at 1%. In addition to it, there are other charges payable by customer, which are society formation charges 25,000, club charges 5 lakhs, development charges 5 lakhs. आप जाकर 194 इनको कहिए 194 IA पढ़ ले। 194 IA में 5 टाइप के चार्जेस हैं, पार्किंग चार्जेस, क्लब चार्जेस, जिसके कि वो 50 लाख की लिमिट से ऊपर आता है और वो कंसीडरेशन प्राइस मान लेती है। पढ़ लीजिए 194 IA, कुछ खुद भी तो पढ़े तब क्लियर ज्यादा होगा। 194 IA निकालिए, वहां कंसीडरेशन को डिफाइन किया हुआ है, वो देखिए। Sir, the next question is responding of notice under section 133(6) by creditor. Will that be correct to treat as unexplained credit under section 69 by जब the आप रिस्पॉन्ड नहीं department in करें, faceless code? आप भैया आप AO हैं, आप बार बार चिट्ठी लिखे और रिस्पॉन्ड नहीं करें। अब केजरीवाल साहब रिस्पॉन्ड नहीं करे तो क्या हुआ था? 8 उसका 9 में गिरफ्तार हो गया था। तो ये भी यही चीज है, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, व्हाट विल ही डू? तो ही विल ऑल्सो ट्रीट एज अनएक्सप्लेन्ड। आप बात को तो समझिए ना, एक सम्मन दिया गया, 2 वाले को बुलाया गया, आप जाते नहीं है तो ही इज हेल्पलेस, ही हैज टू कंप्लीट द असेसमेंट। अब ये हमारे केजरीवाल साहब 8 में नहीं गए, 9 में जाकर गिरफ्तार हो गया तो वो शोर मचा रहा है। शोर क्यों मचा रहा है भाई? तो शोर मचाने का मतलब क्या है भाई? चलिए सर, गलती से बोल लिया है मजाक के तरफ से, डोंट टेक इट सीरियसली। Sir, the question is the other way around. It is not from the noticee point of view. It is from the point of view of the assessee being assessed. कहाँ से एक्सप्लेन करेगा? उसको बोला होगा, तू उसको बोला नहीं दिया तो क्या करे वो? तुझे ये बताया ना, उसने कहा जी इनको सम्मन करो। डिटेल किसने दी थी? उसने कहा था ना ये लोग हैं, उसको सम्मन किया, नहीं करेगा तो कहेगा तू उसको अपीयर करवा दे, नहीं करेगा तो टैक्स लगाऊं। उसने कंप्लीट नहीं करनी क्या असेसमेंट? ही हैज टू कंप्लीट द असेसमेंट। Cash seized in the state election time and deposit by income tax in October 23. What we do now for refund? अब क्या असेसमेंट होगी, उसकी असेसमेंट के बाद आपको अगर रिफंड होगा तो ले लेना। ये तो असेसमेंट होती है, वो 1 ही साल की असेसमेंट होगी इस केसेस में। 1 साल की असेसमेंट होगी, उसके बाद जो आपकी लाइबिलिटी होगी, आपका पैसा वापस है तो वापस मिल जाएगा, डिफरेंस ज्यादा है तो ज्यादा देना पड़ेगा। Sir, in case of assessment order under 143(3) for FY 21-22, addition is made by increasing closing stock by AO. Can we increase opening stock of FY 23-24? वाह वाह वाह, ये what kind of a thing is that yaar? No question. You might have bought, there is no question of doing that. आजकल तो 115 BB लगा देंगे, 78% टैक्स। कितने हैं? 3100। क्या हिसाब हुआ? 4 ये सिवा एक मंदिर का और 4 इधर 5-6। एक मिनट, 1 मिनट सर। यस सर। ये तो कोणता हा का? झालं ना? पार्टनरशिप 45(5). Ancestral lands है। Sir, sorry. Sir, can I pose the next question? Yeah. You Sir, unmute yourself. Unmute yourself, sir. Sorry, sir. Unmute yourself, sir.
Unmute yourself, sir. yourself. सर अनम्यूट कर लीजिए. हो नहीं रहा. हो गया. Unmute है सर. हो गया सर. Sir, the ये next आपने तो कई question बार नहीं is. किया, मेरे तो एक बार ही गलती हुई. चलो चलो बोलो. Next question is ancestral land purchased in 1932, sold in 2020. They are 12 members in family. Share received to each individual is it taxable? Co-owners, all are co-owners. Okay. Each will pay tax on his account. सब co-owners हैं. 12 के 12 co-owners हैं. 12 अगर सबके नाम उसमें आ गए हैं, रजिस्ट्री में बेचने का साइन किए हैं, तो सबका अपना अपना शेयर निकालकर कैपिटल गेन निकाल लीजिए और 2001 की वैल्यू ले लीजिए फॉर इंडेक्सेशन पर्पसेस. सर ये क्वेश्चन का मजा आता है जब सामने आमने, क्योंकि उससे कुछ सवाल पूछ लो फिर ले लो. अब वो पता तो लग नहीं रहा, मैं बोले जा रहा हूं जो मेरे को समझ में आ रहा है. वो क्वेश्चन है कहां पर, जरा बता देना, मैं भी देख लूं. Sir, एक चार्ट में है question. सर. Sir, if it is a partnership firm or a company, so what is the implication of section 45(5) when tax will arise at the No, time of 45(5)(a) will not be applicable in case of partnership firm or a company. It is Correct. applicable only in case of individual or HUF. individual and HUF? Correct. It is not applicable. Sir, there is a question. तो Cooperative इसका ये society इलाज है. file Then you have to file go to ITR Pune and give under them section 1. live lecture. अब बोलिए दोबारा. Sir, cooperative society filed ITR क्या? under section 148 for AY 1920. AO passed order under 147, and in the order he mentioned in the last para of the order that penalty proceeding under section 270A for misreporting of income. Society's books are audited as per ये तो फैक्ट Societies देखने Act. पड़ेगा. मिस रिपोर्टिंग में 200% लगता है. ये तो फैक्ट देखने पड़ेंगे. 270 में लगाया है तो मैं कैसे बता दूं what are the facts of that? Why is he charging to it 200% not 50%? It is all the facts. What kind of a misreporting is that? I can't say anything. वो तो फैक्ट सारा उसका ऑर्डर देखना पड़ेगा तभी पता लगेगा. But he has rightly pointed out misreporting तो 270 सबसेक्शन 8 में लगेगा. ये तो फैक्ट देखने पड़ेंगे सर. ये ऑर्डर के बगैर कैसे पता लगता है? This you can't understand. आप लॉ का पॉइंट पूछिए, फैक्ट के पॉइंट देखकर पता लगता है क्या ऑर्डर है. उसके बाद ही बता सकता हूं कि वाई पेनल्टी अंडर मिस रिपोर्टिंग नॉट अंडर रिपोर्टिंग. अंडर रिपोर्टिंग में 50 लगता है, मिस रिपोर्टिंग में 200% लगता है. चलिए आगे. शर्मा सर. Yeah, Sanjay Sharma sir. Yeah, unmute yourself, sir. Yes. Yes, you are saying something to sir. I am saying that sir was saying that he is not enjoying on the virtual mode. So Pune people are inviting you there to have a live this Live lecture, session. Yeah, definitely, sir. live session. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, we are 30, It's 40 always members a are free here. open We invitation are from Pune actually side. live demo actually, sir. Yes, sir. Next question, sir. Yes, Tell sir. me. The trust received immovable property as a donation. Is it taxable in the hands of trust? Trust having 12A and ETG. No, sir. No, 11.5 immovable property which received is also 11.5. Absolutely no problem. 11.5 में immovable property आती है. So if the donation is received, you have already applied it. Whether it is corpus or non-corpus doesn't make any difference. Because if you receive something in kind, you have to convert into 11.5 within 1 year from the end of the year in which it received. But this is already as a immovable property. So it is rightly from the beginning, it is 11.5. No problem. No problem. But
Stamp duty will have to be paid. One thing that you remember, immovable property, when you get a gift or donation, stamp duty will have to be paid on that. Okay, sir. The next question. AO reject DCF method of share valuation by the time. Sir, ये practical चीज है. देखिए ये होता है. Whatever issue you are asking, these are facts cases. I have to see the law, the judgment, and then I can go. You ask the law point, because the point is here you are asking personal questions which cannot be answered without seeing the facts of the case. Facts of the case बता तो मैं बता दूंगा, लेकिन facts ही नहीं पता मुझे, तो एक लाइन में आप मेरे से सवाल पूछे, हर चीज रिकॉर्ड हो रही है, मैं गलत चीज बोल भी नहीं सकता. पूछिए लॉ का पॉइंट पूछिए सर, लॉ के पॉइंट जो मर्जी पूछिए. फैक्ट के केस, आफ्टर सीइंग द केस, आफ्टर सीइंग द फैक्ट्स ऑफ द केस. Yes, sir. If husband and wife purchase a flat, say for 1 crore in the year of 2020, husband was paid 95% purchase price and wife has just paid 5% of purchase price. They sell that flat at 1.5 crore in 2024. Then whether capital gain to be worked out 50-50 or 95.5. 95. As per income tax, 95.5. Okay, sir. Funds whose funds belong to the husband, 95.5. You buy a flat and you put the name of the wife also, that she in income tax she is not the owner. Owner is the person who has given the money. You could have given the loan to the wife and then they could have bought it 50-50. But when you have paid directly 95.5, then no question. You should have paid 45% to the wife as loan, and 50. She should have taken 50. You should have taken 50. Then there would not have been a problem. So next question. These whole land rights acquired in 1964. Anji? Sold to 2021. Whether fair market value as of 1st April 21 can be taken. First fair market 1 for 2001. Okay. Okay. Fair market value you have to take it. But mind it, if there is a stamp duty value on 1st April 2001, you will have to take stamp duty value. But if there was no stamp duty value on 1st April 2001, then you have to take it market value. Say, actually, question is we have time limits, but I will ask that question. Sir, please explain MSME payment within 45 days for crystal clarity. Everyone knows. Come to 43BH and start with the language. Please write with it. Notwithstanding anything contained under any other provisions of the Act, if there is some allowable as deduction, otherwise allowable as deduction, in respect of any sum payable to micro or small enterprise after the date specified under Section 15 of the SME Act, shall be allowed irrespective of the method of accounting followed by the SSC in the previous year in which payment is made. आपको क्या करना है? आपकी सप्लाई कब आई? आपको 31 मार्च 2024 का देखना है. उससे पहले पेमेंट कर दी तो सिर्फ इंटरेस्ट है, सिर्फ इंटरेस्ट है. लेकिन 31 मार्च 2024 को देखकर ये देखना है ये माल कब दिया गया था और पेमेंट टर्म्स क्या थी. अगर आपका एग्रीमेंट है तो मैक्सिमम 45 डेज है. Am I right? तो सपोज आपने 15 फरवरी को खरीदा और आपका एग्रीमेंट 45 डेज का है, तो 15 तारीख से लेकर 45 डेज तक अगर पेमेंट कर देता है तो कुछ भी डिसअलाउ नहीं होगा. Okay, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन के अंदर पेमेंट करनी थी तो कुछ भी. अगर सपोज 25 मार्च को आया, अभी 15 दिन तो निकले नहीं 31 मार्च को, तो 15 दिन देख लीजिए, उस दिन तक दे दे तो कोई डिसअलाउ नहीं करना. अगर 15 दिन निकल गए तो डिसअलाउ करना. लेकिन अगर एग्रीमेंट इन राइटिंग है तो मैक्सिमम 45 डेज. अगर राइटिंग में 30 दिन का एग्रीमेंट है तो 30 दिन, 40 दिन का है तो 40 दिन, अगर 90 दिन का है तो 45 ही माना जाएगा, 40 नहीं, 90 नहीं माना जाएगा. और इंटरेस्ट तो अलग चीज है. इंटरेस्ट देते हैं 3 times ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड रेस्टली 3 times ऑफ बैंक रेट. लेकिन वो छोड़ दो, पहले तो 43BH में ये देखिए, आपको 31 मार्च को क्रेडिटर की लिस्ट लेनी है.
और फिर एक एक आइट का देखना है कब माल सप्लाई हुआ। अगर 45 डेज या 15 दिन नहीं हुए तो उतना तो इंतजार कर सकते हैं, उसके बाद दिया तो गए। अगर 45 डेज 15 दिन हो चुके हैं 31 मार्च को, तो वो सारा का सारा डिसअलाउड। ये सम टोटल है सर जो मेन है, और ट्रेडर कवर्ड नहीं। Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. The next question, AY 2013-14 and 14-15 notice is issued in April 21. Is reopening valid? सर वो आपको वही वाला था, वो प्रोवाइजो दिया हुआ है, प्रोवाइजो दिया हुआ है। आशीष अग्रवाल के बाद तो कई जजमेंट आ गई हैं, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट क्या देगा वो डिफरेंट है। उस पर लिखता व्हाट, उस वक्त अगर नोटिस दिया जाता 31 मार्च 21 वाला, तो कितने साल तक वैलिड हो? 6 साल। लेकिन अगर वो सर्च का केस है तो 10 साल। 31 मार्च 21 को ये खत्म हुआ। 31 मार्च 21 को अगर नोटिस दिया जाता तो कितने साल का खुलता? वो 6 साल मैक्सिमम थे, सर्च के केस में 10 साल। अगर इससे बियॉन्ड है तो वैलिड नहीं। Sir, next question. Please describe the taxation of revocation of the right on land related to long term and short term. दोबारा बोलिए। Please describe the taxation of revocation of the right on land व्हाट इज related to रिवोकेशन? long term and short term. रिवोकेशन तो नहीं होता, रेलिंक्विशमेंट होता है। Yes, sir. Yes. The question is wrong, I think. क्वेश्चन नहीं ठीक है। अब जरा 5 मिनट रह गए सर, अगर कोई Yes, है sir. तो Yes. तो Last जरा question, कर sir. लीजिए। मुझे शार्प 1 o'clock आई हैव टू लीव। 100%. Last question. In case of cooperative society, return filed after due date for financial year 19. नो डिडक्शन अंडर ATP if the return is filed after due date. Sir, I didn't complete it. So I get chance to ask one more question. In term, any other person in the context of section 269 SS and T means loan in cash can be accepted, repaid from related persons without any restrictions. नो क्वेश्चन। एनी पर्सन Yes, sir. है, रिलेटिव कुछ नहीं, सिर्फ एग्रीकल्चरिस्ट के लिए माफ किया हुआ है। बाकी एनी पर्सन है, या फिर उनके लिए जो बैंक से कैश की डीलिंग करते हैं वहां, या नोटिफाइड इंस्टीट्यूशंस हैं, सबका नहीं है सर। Sir, 1 minute रह गया है। एक और last पेमेंट question. करते हैं। Retiring partner outstanding balance is transferred to loan account. Is it constructive payment and नो liability इट to इज tax नॉट कंसिडर्ड द पेमेंट। and tax arises or वो actual क्या payment is होता है कि अगर आपने कर दिया तो 269 SS वगैरह की टीमें कुछ जजमेंट्स हैं, क्यों कहता है ये वो हो गया, पेमेंट देना जरूरी नहीं। वो कहता है लोन में कन्वर्ट कर लिया, कोई बात नहीं, अकाउंट पैसे नहीं आया तो कोई बात नहीं, जजमेंट पेपर में। Yes, yes, sir. Now we will stop here. We have only 2 minutes in our hand. So The last question was it is- consisting of 7 questions. चलिए। Yes, sir. Formalities is there to vote of thanks. Okay, First okay. of all, before giving official vote of thanks, I thanks from my bottom up to you and our dear friend Sanjay Sharma ji, who took a lot of efforts for arranging this session. Sharma ji, thank you. यही प्यार और मोहब्बत हमेशा बरकरार रही है MTPA पे। और सर इन्हीं की वजह से करा है, मैं तो जानता भी नहीं था अदरवाइज। इन्होंने कहा करना है तो मैं मना इनको कर ही नहीं सकता। ये the next time we will call you in Pune for live session. Sure. Yeah, sure. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Nice. Sir, thank you very much. वो थैंक यू उनको फॉर्मल कर दो, फॉर्मल करने दो उनको। I'm sure this information is beneficial for our participants. Friends, I propose for the vote of thanks on behalf of Maharashtra Exporters Association and all participating associations. I extend heartfelt thanks to Dr. Girish Ahuja Sir for gracing us with his profound knowledge and expertise in the field of income tax. During this enlightened conference on controversies issues in income tax, the insightful presentation has not only illuminated the complexities surrounding income tax, but it also provided us with practical solutions and perspectives to navigate through these challenges effectively.
His dedication to sharing his wisdom and experiences has undoubtedly enriching our understanding and will continue to inspire us in our professional journey. We are truly honored to have Dr. Girish Ahuja Sir among us, and his contributions has undoubtedly elevated the quality of our discussion and learning experiences. Once again, I heartily thank you to Dr. Girish Ahuja Sir for his invaluable presence and insights. Anyone wants to speak some? Sir, our president is speak on. Yes, he wants to speak something. ज्यादा कुछ नहीं, आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सर, आपने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और आपने हमें इनवाइट किया इस टॉपिक पे, क्रिटिकल इश्यूज पे। और संजय सर भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। वी विल डेफिनेटली प्लान सम इवेंट और सेमिनार इन पुणे फॉर लाइव कॉन्फ्रेंस। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you. Thank you all of you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. I declare here session is over. Friends, we will meet on next Thursday, 28 March, sharp 2:45 p.m. I request to all participants to join in time.